Okay. Okay, so now let's see that how this total internal reflection used to go on, or how this total internal reflection occurs, or how this happens. So for this one, the very first thing, as just now I said, that the light ray has to pass from the denser medium to rarer medium. तो ये चीज तुम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि लाइट रे को जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जाना है, तभी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. So over here I am having two different mediums. Okay, the upper one used to be the rarer one, and the lower one is the denser one. Now if I will go for different situations, so first of all, let's go to have the normal over here. Let's put the normal over here. Now what will happen if the light ray is coming from the denser medium to rarer medium? हम लोगों को ये पता है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट रे जो होती है वो बेंड कर जाती है away from the normal, यानी वो बेंड होती है away from the normal. So say as this is an angle, this is an angle in which the light ray is going to enter from the denser medium to rarer medium. तो ये एक पर्टिकुलर एंगल है जहां पर कि हम लोग ये देखेंगे कि लाइट रे जो है वो एंटर करने वाली है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ. So what we are going to observe, as we know this thing, that it is going to bend away. So we will see that this light ray is going to bend away from here. So it is like this. So it forms like this. So here we are having this one is going away from the norm. Now, if I will increase the angle a little bit more, if I will increase the angle, so see here, this is the angle of incidence. This is the angle of incidence. Say as this is angle I1. And because of that, I am having the angle over here, that is angle of refraction 1. Okay. Now, what would happen if I will increase the angle a little bit more? Okay, what will I will observe over there? So if I'm going to increase the angle a little more, then I will find that the bending of the light will be little more over there. Bending जो होगी वहां पे लाइट की उसकी और थोड़ा सा ज्यादा होगी, तो वहां पर कैसे ज्यादा होगी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि it is going to come at in this way. So it is going to come like this. So there will be a little more bending. So why it is so? It is because our angle of incidence is more. Our angle of incidence is greater over here. So यहाँ पर अगर हम लोग angle of incidence को देखते हैं तो ये वाली जो angle of incidence है ये हम लोगों को say as for example this is angle of incidence 2. And respect to this one, we are having the angle of refraction 2 over here. So this is little greater than to the previous situation. ये previous situation से और ज्यादा है. Now अगर हम इसी तरह से अगर एंगल को और बढ़ाते चले जाएं, अगर हम लोग इसी तरह से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते चले जाएं, तब हमको वहां पर क्या दिखने वाली है? देखो, तो अगर हम इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, then I'm going to observe that the light ray is going to refract in such a way, understand, the light ray is going to refract in such a way that the refracted ray become parallel to the intersection of both the mediums. The refracted ray become parallel to the intersection of both the mediums over there. तो यहाँ पर ये दोनों ही लाइट रे जो है वो एक दूसरे के मतलब जो वो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो यहाँ पर पैरेलल हो गई है, या फिर एक कंडीशन कर रही है नॉर्मल के साथ, एज अ नॉर्मल के साथ 90 degree. See over here, this angle can be said to be as, this is the angle of refraction 3 due to the angle of sorry, not there, just a minute. Okay, so it will be here. So over here, this angle. So if I go for this particular angle, then I will have, this is an angle of incidence 3. And because this angle of incidence 3, we are having this angle of refraction like this. Now at this situation, my angle of incidence, when it is having a certain value, I don't know what is the value right now, but I can say that the angle of refraction is 90 degree. This is of sure. This is confirmed over here. So this is the thing which we have to understand, the very first one before we go for the total internal reflection. So this angle in which the angle of refraction becomes 90 degree
is called to be as the critical angle. It is named to be as the critical angle. इसे हम लोग critical angle कहते हैं. तो समझो इसको इस तरह से कि हम लोगों ने जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पे बड़ा किया, जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अगर इनको सबको अरेंज करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 को, और उससे भी बड़ा ऑब्जर्व करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 को. ठीक है. तो जब हम लोग यहाँ पर इनको ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रही है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, देन इट विल बी आई थिंक more you can understand it in a good way. So if I go for this one, over here, so if I say for angle of incidence 1, if I go for angle of incidence 1, this one as a single component, so इससे बड़ी हो गई दूसरी वाली angle of incidence. So angle of incidence I2 is greater than this one, and इससे भी बड़ी हो गई थर्ड वाली इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 3. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये तीनों एंगल बड़ी हो रही है. जैसे जैसे यहाँ पर ये तीनों एंगल बड़ी हो रही हैं, इसके रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बड़ी होती चली जा रही है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बड़ी होती चली जा रही है. हियर यू कैन सी दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 जो है वो और बड़ी होती चली जा रही है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 है वो और बड़ी हो गई है. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर एक रिलेशन जो बनानी है, वो रिलेशन हम लोगों को समझना है. दैट रिलेशन इज बिटवीन these two angles. The angle of refraction where it is 90 degree, for that respect to the angle of incidence has a certain name which we call it as a critical angle. यानी वो एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री की बन जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल. Are you all getting this thing? All the students who all are present over here. So are you getting this thing? ये चीज सबको समझ में आ रही है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री की बन जाए उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं. Now, this is a very important angle. This is going to be a very important angle. Now, why it is going to be a very important angle? Let's understand over here. See, if I will increase my angle of incidence a little more, if I will go, I will change the color over there because I had already used that color previously. So here I will go with which color? Almost all the colors been used. Okay, so here I will go with this color. So here, this one. So this is the angle which is much more greater than angle of incidence 3. So in this condition, again refraction will happen. So refraction will happen means it will bend away from the normal. It is going to bend away from the normal. So here when it is bending away from the normal, it had bended in this way. It got bended like this. Okay, so here it got bended like this. So when it been bended here, then we find that the light ray had entered to the same medium. जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरह की बेंडिंग, तो हम लोगों को तो ये तो ऑब्जर्व हो रही है कि लाइट रे तो सेम मीडियम में ही चली आई. लाइट रे तो सेम मीडियम में, जिस मीडियम से निकली थी उसी मीडियम में निकल कर आ गई है. So how this happened? This happened due to the refraction only. देखो ये रिफ्रैक्शन ही है, ये रिफ्रैक्शन ही हो रही है. लाइट रे जब एक डेंसर मीडियम से, देखो यहाँ पर डेंसर मीडियम से वो जा रही है, ये तो हम लोग की डेंसर मीडियम थी, डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, और प्रिंसिपल के तहत वो उसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही गई है, लेकिन इट फॉर्म्ड इन अ सच अ वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. हियर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये याद रखना. और जब ऐसा होता है तो हम लोगों को ये दिखता है, it appears to us that the light ray had entered to the same medium. And when the light ray had entered to the same medium, it means, or it denotes that the light ray had created a new phenomenon, and that phenomenon is called to be as the total internal reflection. यहाँ पर हम लोग इसी चीज को कहते हैं total internal reflection. तो ये चीज याद रखना. तो देखो लाइट रे डेंसर मीडियम से क्रॉस होकर रेयरर मीडियम में जा रही थी, लेकिन वो डेंसर मीडियम में ही रिटर्न बैक हो गई. क्यों वो डेंसर मीडियम में रिटर्न बैक हो गई? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम लाइट रे जाती है
तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो वो इतना अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई कि वो सेम मीडियम में ही रिटर्न आ गई। तो इस पाथ को जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जब हम लोग इस चीज को ऑब्टेन करते हैं, तब हम लोग यहाँ पर इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the light ray goes from a denser medium to a rarer medium, it refracts in such a way that the refracted light ray enters to the same medium with the same medium. So that is the condition which we are talking about over here. Now over here, this angle, if you will go for this particular angle of incidence, this particular of angle of incidence, so this angle of incidence, if I will say as it is angle I4. So over here, if you measure the angle with the normal to the refracted ray, that will be equal. यहाँ पे ध्यान देना, अगर तुम लोग यहाँ पर इस वाले एंगल को मेजर करो जो नॉर्मल के साथ नीचे में सेम मीडियम में नॉर्मल के साथ, अगर तुम लोग इस रिफ्रैक्टेड रे के एंगल को मेजर करोगे, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना काउस करेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना काउस करेगा। बट दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, this angle R is not angle of refraction, this is angle of reflection, you can say, but it is not so very often to observe it as in the form of angle of reflection, because we had already observed the angle of refraction over here, which is much greater than to 90 degree. So are you all getting this thing? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, I hope you all had understood this, or no, or all of you are sleeping, is it so? Got so bored? Yes, students. Not understood the last situation. Last situation you haven't understood. Okay, so have you understood till 90 degree? Yes, sir. Okay, so just for that one only you can go for it. Just तुम उसी से ये चीज समझो कि तुमने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा किया, जब तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, again I will make a table and with that one I will go for it. Just a minute. Then I think it will be much easy to understand. Okay, so over here, suppose for example, हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, say as for example, I'm just assuming it's not exactly like that, लेकिन जो मैंने वैल्यू एग्जैक्टली नहीं, वो नहीं है, लेकिन फेनोमेना प्रॉपर्टी सब एक जैसा है। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 40 डिग्री है, सपोज मान लो कि 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगी वो से एज फॉर एग्जांपल 45 डिग्री होगी, यहाँ पे बड़ी होगी ये वाली एंगल ना। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम और थोड़ा बड़ा करते हैं, से एज फॉर एग्जांपल 50 डिग्री पे लेके चले जाते हैं, से एज फॉर एग्जांपल 50 डिग्री पे लेके चले जाते हैं, then I will observe that the refractive angle will become as say as for example 70 degree, say as for example it is 70 degree। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, तो से 60 डिग्री पे हम लेके चले जाते हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर ओवर हियर एंड इट विल बिकम से एज 90 डिग्री। वो सपोज मान लो कि वो 90 डिग्री पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा ही हो रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ी हो रही है। क्यों बड़ी हो रही है? क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकती हो कि ये जो लाइट रे बेंड कर रही है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। चाहे तुम इस कंडीशन को देखो, इस सेकंड कंडीशन को देखो, इस थर्ड कंडीशन को देखो, इन सब में तुम लोग देखोगे कि लाइट रे जो है वो अवे भाग रही है, वो अवे भाग रही है। वो एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा समय आता है जबकि उसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है वो 90 डिग्री बन जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसके लिए 90 डिग्री बन जाती है। तो उस एंगल को हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने इसका नाम दिया हुआ है एज अ क्रिटिकल एंगल। क्यों क्रिटिकल एंगल देते हैं? क्योंकि अगर हम फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं,
अगर हम इस एंगल से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, से एज फॉर एग्जांपल नाउ माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 70 डिग्री, सपोज फॉर एग्जांपल, over here my angle of refraction will become greater than to this 90 degree. It will become greater than to 90 degree and it will become 110 degree. सपोज यहाँ पे ये 110 डिग्री आ गई, तो 110 डिग्री जब आती है तो देखो यहाँ पे जब तुम्हारे पास ग्राफ का लाइन है तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो तुम्हारे पास जब लाइन यहाँ पर ये आ गई, ये जब परपेंडिकुलर बन गई, अब इसके ऊपर अगर जाएगी तो वो तो नीचे की तरफ भाग जाएगी, वो तो नीचे की तरफ भाग गई, तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है। लेकिन जब हम लोग इसे देखते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, अरे ये तो सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, ये तो सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है। तो जब ये सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है तो इसका मतलब होता है, या फिर इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the light ray is entering from a denser medium to a rarer medium greater than to the critical angle, greater than to the critical angle, then the light ray refracts back in the same medium. हम reflect नहीं बोल रहे हैं, refracts back in the same medium by causing a reflection that is known as the total internal reflection. हाँ बोलो हिमांशी। सर जैसे रिफ्लेक्शन में थोड़ा लाइट अब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस में, तो इसमें भी अब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं, यही मजेदार बात है, यही मजेदार बात है। रिफ्लेक्शन में हम लोग 100% लाइट रे को नहीं बोल सकते हैं कि वो बाउंस बैक करती है, उसमें से कुछ ना कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब हो जाती है जैसे तुमने बताया। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो इसमें टोटल 100% लाइट रे जो है वो बाउंस बैक कर जाती है, ये पूरी की पूरी बाउंस बैक करती है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। लेकिन वो रिफ्रैक्शन अपेयर हो गया हम लोगों के लिए, या हम लोगों ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है एज इन अ पैटर्न ऑफ अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इज इट ओके? समझ में आ रही है सबको बात? इज इट क्लियर? Yes, sir. Now all of you had understood for this particular thing, is it or not? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So now two important conditions which is required to which is required for the total internal reflection. तो total internal reflection होने के लिए दो important reasons जो हैं वो क्या क्या होने हैं? सबसे पहला रीजन जो होना है वो होना है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन टू द एंगल ऑफ क्रिटिकल, और क्रिटिकल एंगल से वो बड़ी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट जो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है वो देखनी है कि द लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। ये याद रखना, लाइट रे जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, तभी ये फिनोमिना दिखेगा। क्योंकि अगर अगर हम लोगों को यहाँ पे इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को दूर फेंकना है, दूर भेजना है, तब तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही ना लाइट को आना पड़ेगा, तभी ना ये चीज हो पाएगा, नहीं तो वो तो होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो तो नॉर्मल की तरफ भागती है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट नीड्स, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू रिक्वायर टू कीप इट इन योर माइंड। ओके, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? Yes, sir. यस। Is there any problem till here? Because I want to end up the class over here only. Do anyone is having? No, sir. No problem till here. No. Okay, then you all revise. You all revise, and then we will have our next class on the next day, and then we will discuss more on that one. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay Yes, then. sir. Okay then. Bye for now. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.